Can you listen my voice? Can you able to listen my voice? Yes, ma'am. Okay. Hello, am I audible? Bonality, you are not audible.
please unmute yourself. Barnali De, please unmute yourself. Everybody is not joining. That is why I'm meeting myself. Oh, I thought it's all right. It's all right. I The have class already. is being recorded. I have checked. Aparna just told me to check. The class is Yes, being yes. recorded. Yes, yes. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, thank you. Go ahead. Thank you. Please, everybody, write your enrollment number, your name, and the college from which you are studying. Okay. It's 12 o'clock plus, so I will start my class. Tell your friends to come as quick as possible. Okay. Can you able to listen my voice? Yes, madam. Okay. Tell your friends to join quickly because we'll start our day. Okay. 12 o'clock already passed. Can you able to see the PPT? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. हमको पता भी नहीं, So मोबाइल भी नहीं लेके आया अपना। तो आप कैसे अटेंडेंस बनाएंगे? सीधे बना लीजिए, इसी से अटेंडेंस बनाइए। इसे बनाना था तो इसी में ना। हाँ हाँ, इधर रुकिए, हम बताते हैं। इसको ऐसे दबाइए। तो कितनी में क्लास हो रहा है? नहीं, मेंटल हेल्थ का। कैसे? हाँ, यहीं से करते हैं। अटेंडेंस Anjana, में। Anjani, mute यस, yourself. यस मैम। Okay. So I will start my topic today. So today what we will learn, therapy. Please mute yourself. यस मैम। So today we will learn about therapeutic communication and therapeutic nurse-patient relationship. Please, anybody, if you are हम unmute, जाते घर please पे mute चलने yourself. ना आएंगे। Who is Anjani? Okay, okay.
So today our topic of discussion is therapeutic communication and therapeutic nurse-patient relationship. Already you know in foundation you have learned that communication. What is communication? Communication means you are sharing information with someone. Okay, through some media or through direct conversation, we are sharing something with someone. Okay, certain purpose is there, or sometimes we only for the social relationship we are making communication. So communication means when one sender is there, one receiver is there, and a sender and receiver, they are sharing their information. Sender is giving certain message to receiver, and receiver is giving feedback to sender through some channel of communication. So that is the communication. We already know that during the patient care we have to do communication, but in psychiatry the communication is termed as therapeutic communication, because at that time we will use communication for a therapeutic purposes. Okay, for therapeutic purpose we will use the communication. That is why it is the therapeutic communication. So what is therapeutic communication? Therapeutic communication किसको बोलते हैं? When we are having certain goal, okay, we are making communication, we are sharing information with patient with certain goal. Okay, we will set certain goal, and that goal will be mutually defined by patient as well as the therapist. Therapist जो goal set करेगा, patient उसमें agree करेगा. Means agree means पूछना नहीं है, लेकिन when you are communicating with the patient, patient is agreeing to express his view, his problem, his any understanding she is expressing. That means they are mutually agreed with the goal. So when one goal is there sometimes, but in normal communication sometimes बास में बैठे हैं तो कोई आपके पास आकर बैठ गया, ओके, तो ये आप उसके साथ बात करना शुरू किए, लेकिन उसका कोई गोल नहीं होता है, ऐसे ही टाइम पास के लिए आप बात कर रहे हो. ओके, सो यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन इन द बस with just passing the time or just for social relationship. But इसमें क्या होता है, जब therapeutic communication हम करते हैं तो we are having certain goal, and that goal should be mutually defined, mutually agreed by both patient as well as the therapist. So ये है therapeutic communication. Okay, communication आप जानते हैं, communication refers to the reciprocal exchange of information, ideas, beliefs, attitude between person or among group of person. It is goal directed process in nursing. It is used in nursing process also. So what is therapeutic communication? आप देख रहे हो ना, ये स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है. यस मैम. Okay. What is therapeutic communication? See, the therapeutic interaction between the nurse and the client. That communication is between the nurse and the client, where we are developing mutual understanding. हम patient को समझते हैं, patient हमको समझते हैं. तो therapeutic interaction between the nurse and the client will be helpful to develop mutual understanding between two individuals. Hello. So the therapeutic interaction between the nurse and the client will be helpful to develop mutual understanding between two individual. Mutual understanding, जो दो individual है, patient एक है, एक nurse है, तो उसके अंदर mutual understanding होगा. तो ये है therapeutic communication. एक goal हम develop करेंगे जो mutually set goal है. Suppose you are talking with a psychiatric patient. Your goal is to explore the cause of the illness. Okay, you are setting a goal that you have to explore the cause of the illness, and patient is expressing his own problem to you, and whenever you are interacting with the patient, patient is giving information to you. That means patient is also agreed with that goal. You will also share the cause of the mental illness with you. So that is the therapeutic communication. So interaction is a learning experience for both client and for the nurse, and a corrective emotional experience to the client to modify his behavior.
हम ऐसे बात करेंगे जो बात करने का तरीका भी हम ठीक कर देंगे कि मॉडिफाई हिज बिहेवियर, ये भी हमारा गोल होगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। पेशेंट आपके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है तो आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का गोल होगा इमोशनली उसको अटैच करके उसका जो रूड बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाए। तो ये है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है ना थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है? यस मैम। Now the purposes of therapeutic communication. What are the purposes? To achieve self-realization, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे, अपना पर्सनल आइडेंटिटी तैयार होगा, ये सब है पर्पस। टू फॉर्मुलेट गुड इंटरपर्सनल थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, नर्स एवं पेशेंट के बीच में एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप फॉर्मुलेट होगा। सेटिस्फाई नीड्स एंड टू अचीव रियलिस्टिक पर्सनल गोल एज वेल एज। बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग में है अटेंड करने के लिए। ओके, एक ही है और कोई कहा नहीं है, और कोई और तो नहीं है कोई। अभी दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे करके हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर वो जो आ रहा है उसको दिख सकेंगे, ठीक है? Okay. So to achieve self-realization, self-acceptance, self-respect, personal identity, personal integration, ये है पर्पस। और एक पर्पस क्या है? एक गुड इंटरपर्सनल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप फॉर्म करना है। उसके साथ क्या है कि हमारा जो नीड है, पेशेंट का जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई नीड्स एंड टू अचीव रियलिस्टिक पर्सनल गोल्स। Then permit the client to express their thoughts truly and openly. We will help the client to express their thought truly and openly. And also we will try to improve the ego strength of the client. Client का जो ego strength है उसको हम improve करेंगे, ठीक है? Now encourage सोशलाइजेशन, पेशेंट सबके साथ बात करें, फैमिली के साथ बात करें, इसमें हम उसको इनकरेज करेंगे। उसका कोई अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है। मॉडिफाई मैलर्टी बिहेवियर, कोई अगर मैलर्टी बिहेवियर, सच मैंने बोला कि रूड बिहेवियर कर रहा है तो इमोशनली उसको हम मैनिपुलेट करेंगे कि वो बिहेवियर करेक्ट हो जाए। तो मैलर्टी बिहेवियर को हम एडप्टिव बिहेवियर में मॉडिफाई करेंगे। देन मोटिवेट द क्लाइंट टू यूटिलाइज द न्यू कोपिंग स्ट्रेटजी। इफ द पेशेंट इज कैनॉट एबल टू कोप विथ his or her stress, then the mental illness ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए we will help the client to identify a new coping strategy and use that coping strategy whenever the stress situation arises. Help the nurse to helps the nurse to identify and intervene appropriate nursing approaches. अदर नर्स को हम हेल्प कर सकेंगे कि वो appropriate nursing approach यूज करें। हम अपने आप यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा फेलो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी हेल्प करेंगे कि एप्रोप्रिएट नर्सिंग अप्रोच वो यूज करें। देन नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। So these are the purpose. Okay, so what are the purpose? To achieve self-realization, self-acceptance, then formulate good interpersonal relationship, then satisfy need and achieve realistic personal goal, then अपना जो thought है उसको openly and truly express करेगा, ego strength को जोरदार करना है, then improve the socialization and family interaction, then communication problem अगर कुछ है तो उसको treat करना है, maladaptive behavior को we have to modify मैलेटिव बिहेवियर इनटू एडप्टिव बिहेवियर। द न्यू कोपिंग स्ट्रेटजी को हम यूटिलाइज कर सकेंगे और नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकेंगे। सो दीज आर द पर्पसेस। देन ये जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है ऐसे ही हम नहीं कर सकेंगे, उसका टेक्निक होता है, बहुत सारा टेक्निक होता है। कैसे वाला टेक्निक होता है? आप जैसे वैसे बात नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज सर्टेन टेक्निक थेराप्यूटिक। ओके, so first one is that you have to observe the patient. The first one is the observing. Observing is made by the nurse of wringing of hands, wiping perspiration, dry lips,
speaking in a very low tone. The nurse is making observation of a non-verbal communication. You know, communication again two types: verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication, what is verbal communication? Verbal communication means we are talking. Now I am talking with you by using words, okay, by using sound. So this is verbal communication. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जो मेरे मुंह में दिख रहा है. ओके, आई एम जस्ट throwing my brow, throwing my forehead, and I am just scratching my cheek. These are my non-verbal communication. Okay, I am just always watching my what these are showing certain kind of anxiety, these are showing certain kind of inattentiveness. So these are the non-verbal communication. So communication टाइप्स होता है दो तरह का, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम ऑब्जर्व करेंगे. वर्बल कम्युनिकेशन भी ऑब्जर्व, वर्बल कम्युनिकेशन तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे. जो साउंड होता है कम्युनिकेशन का, जो हम बात कर रहे हैं, सपोज आई एम टॉकिंग एंड आई एम यूजिंग माई वॉइस इन वेरी हाई नोट, दैट shows that I am angry. So ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है. जो साउंड आता है वो ठीक नहीं है. तो ऑब्जर्वेशन और क्या होता है, मेरा फेशियल जो एक्सप्रेशन है, आई एम ऑलवेज रिंगिंग माई हैंड एंड means sweatful, I am always wiping my perspiration. These are the observation. It will show that the person is inattentive, or the person is anxious, or the person is fearful. So observation is a therapeutic communication technique. Okay, so the further communication we will use certain technique, and in this technique the first one is that observing. Okay, now listening, what I am saying, you are listening. So my voice, variation of voice, you are listening. Okay, I am talking in very low tone but in high pitch. So that is showing that I don't want that other will listen my scolding to you, but I am scolding you. Okay, so this is the listening. Whatever the patient will tell, we will listen. Okay, we will listen whatever the patient will tell. मैंने एक्टिव लिसनिंग पढ़ाया था ना, सोलर टेक्निक. एक्टिव लिसनिंग पढ़ा था. यस मैम. वो जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक नर्सिंग जब पढ़ाए थे, तो हमने पढ़ाया था कि एक्टिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनिंग करना है, ठीक है. बात सुनना है, पेशेंट का समझना है, एंड वी हैव टू शो इंटरेस्ट टू द पेशेंट. पेशेंट को लगना चाहिए कि हम सुन रहे हैं. तो ये है लिसनिंग. सो द टू टेक्निक, फर्स्ट वन इज द ऑब्जर्विंग, सेकंड वन इज द लिसनिंग. देन restating. The nurse restate or repeat what the patient has been saying. Okay, restate. Stating means बोल रहा है. Restating means repeat, बोल रहा है. तो whatever I am telling patient, whatever patient is telling, I am repeating that thing. Whatever the patient is telling, I am repeating that thing. That is the restating. So the nurse restate or repeat what the patient has been saying. It can be in the form of a question or a statement. For example, patient बोल रहा है कि my children are going through a financial problem because I am sick. Nurse क्या बोल रहा है, your children are going through a financial problem because you are sick. So patient जो बोल रहा है, nurse उसको सिर्फ repeat कर रहा है. तो ये है restating. The nurse is restating the statement to increase the patient's awareness of his children suffering due to his sickness. आप जब प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल में एक करना होता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग. You have to do process recording during your practical experience. तो वो प्रोसेस रिकॉर्डिंग के लिए ये जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है, ये मस्ट है. So everybody, please write, please make it as a note, all the therapeutic communication technique, because it is needed for making your MSc or practical. For practical, it is needed. So this is restating. So first क्या बोला मैंने? First क्या बोला? Observing. Second क्या बोला? Listening. Active listening. Third one is the restating. Restating means repeating. Repeat the some important sentence or word. Repeating whatever the patient is saying. Okay, suppose I am not able to understand that the patient what he is saying,
actually he mean it or not. So I am again repeating the question, whatever the patient has told, repeat करेंगे तो पेशेंट उसको सुनेगा, पेशेंट को क्लियर हो जाएगा जो उसने बोला वही मीन्स सुन पाएगा, तो उसको मीन कर रहा है कि ना, समझ जाएगा वो. So this is restating. Now validating. What is validating? Validate करना क्या होता है? Confirm करना होता है. Validate आप आपको एक आकर बोला, please nursing superintendent ma'am has told you to deliver this thing to anyone. सो इसको आप वैलिडेट करेंगे जो उसने बोला वो ठीक बोला या नहीं. तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैम को फोन करेंगे, मैम आपने बोला है कि ये जो चीज आपने भेजा है इसको यहाँ पर डिलीवर करना है, तो मैम ने बोला हाँ बोला है. तो दिस इज द वैलिडेशन. ओके, वैलिडेशन. सो वैलिडेटिंग व्हाट इज? It is a technique which is the nurse uses to confirm the accuracy of data or information given by the patient. Okay, so it's a technique where patient has given certain information and you are confirming the accuracy of that information. So that is the validating. For example, what is the example? Patient is saying, I get very upset when my husband beats me if I talk anything against my mother-in-law. Okay, so nurse is saying, yes, it makes sense that you get upset when your husband beats you, won't complaining against your mother-in-law. I wonder if you would like to explain further. So the nurse is validating the appropriateness of the feeling of being upset about the patient's husband beating her. So patient is saying something and the nurse is making confirmation that whatever you are saying, that is confirm. ये आप मदर इन लॉ को कुछ बोलेंगे तो आपका हस्बैंड आपको बीट करेगा, तो ये आप कंफर्म कर रहे हो. सो द नर्स इज वैलिडेटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द feeling of being upset about the patient's husband beating her. So this is the validating. So now the reflecting. So reflecting, what is reflecting? In reflection, the nurse highlight the effective content of the patient's communication, that is the feeling or attitude which is implicitly expressed. Okay, reflecting क्या होता है? Reflecting में हम एक बात कर रहे हैं, आपने पूछा मैम आप गुस्सा हो, मैंने बोला नहीं गुस्सा नहीं है, ऐसे बोला, तो आप क्या समझोगे? मैं मुंह में बोला कि गुस्सा नहीं है, लेकिन उसकी जो बातें है उसमें वो इमोशन आ रहा है कि वो गुस्सा है, तो इमोशन शो कर रहा है. तो तुम फिर से मुझे पूछो, मैम आपका वॉइस देखकर लग रहा है कि आप गुस्सा हो. दिस इज रिफ्लेक्टिंग. तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, मेरे वॉइस में आ रहा है गुस्सा. तो ये है रिफ्लेक्टिंग. इन रिफ्लेक्शन द नर्स हाईलाइट द इफेक्टिव कंटेंट. इफेक्टिव मीन्स इमोशनल कंटेंट, okay, of the patient's communication, that is feeling or attitude which is implicitly expressed. Then for example, patient is saying I'm very angry with my wife. Nurse has said it sounds that you are really angry with your wife. So the nurse use of reflection helps the patient to make further or additional clarification about the statement. So this is reflecting. समझ में आ रहा है ना? टेक्निक आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Ma'am. What? Now providing information, we can call it informing. Providing information को हम informing भी बोल सकते हैं. Here we are providing certain information to the patient. Suppose patient आपको पूछ रहा है कि मैम after discharge what I will do, when I will come back for the follow up to the OPD. So आपने बोला कि after discharge you have to complete your medication, you have to follow the discharge advice, and after 1 month you have to come back for the follow up treatment, and if before that your medicine is completed, then again also you have to come back, or your any sign and symptom is arises or worsen, then also you have to come back for the OPD. So now you are giving the information to the patient. Okay, so you are providing personal, social and therapeutic information to the patient, which will increase the patient resource. For example, the nurse informed the patient, मैंने ये example हुआ है,
The nurse informed the patient that a social worker will be here from 10 a.m. to 1 p.m. today. Group therapy will be from 2 p.m. to 3 p.m. tomorrow. The patient may ask for more information, utilize the opportunity to clarify doubt. ये है information. Now clarifying क्या होता है? मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो कुछ बच्चों को स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. ओके, समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. वो क्या बोल रहा है कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने बोला कि ये है वैलिडेटिंग, लेकिन ये वैलिडेटिंग क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. So what I will tell, I will again explain that validating means whatever the patient is saying, you want to confirm that patient is saying, that patient mean it or not. So that is the validating. You are confirming the patient's information. So ये है clarifying. ये है clarifying. Okay. The nurse formulation of a patient's statement or expression of feeling in clearer term without indicating approval or disapproval. ठीक है. एग्जाम्पल क्या होता है देखो, आई एम वेरी सैड टुडे. नर्स बोल रहा है, यू से यू आर फीलिंग वेरी सैड टुडे, वुड यू एलाबोरेट व्हाट इज हैपनिंग. देन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द पेशेंट विल क्लैरिफाई फर्दर व्हाट इज मेक हिम फील सैड. पेशेंट बोल रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो आपने बोल रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं, ये है रिस्टेटिंग. देन आप क्लैरिफाई मांग रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्यों आपको दुख हो रहा है, ये थोड़ा आप खुल के बताइए हमें, तो हमें समझ में आ जाएगा. तो ये है क्लैरिफाइंग. ओके, ये सब पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल के समय इसको लगेगा, तो पढ़कर आना बिफोर कमिंग फॉर द मेंटल हेल्थ प्रैक्टिकल. ओके, नाउ paraphrasing. What is paraphrasing? In paraphrasing, the nurse restate whatever she has heard from the patient. ये बड़ा वाला है. एक सेंटेंस अगर आप रिपीट कर रहे हो तो वो है restating. लेकिन suppose patient is saying a lot of things. After saying the personal history, you are repeating the personal history for the patient. So that is the paraphrasing. एक छोटा करके आप रिपीट कर रहे हो, रिपीट ही कर रहे हो लेकिन छोटा करके रिपीट कर रहे हो, तो ये है paraphrasing. Restating जो है as it is you are repeating. Paraphrasing क्या है, इसको आप पैराग्राफ के तरह रिपीट कर रहे हो. एग्जाम्पल क्या है, पेशेंट बोल रहा है, सिस्टर, all my friends and relatives point out that I will never be able to look after my family member. That makes me depressed. Nurse बोल रहा है, I hear you saying that whenever you meet anyone, your friends and relatives, they point out that you will always remain sick and will be no good to your family. This makes you more sad. Okay, तो क्या बोल रहा है, पेशेंट जो बोल रहा है उसको आप अपने भाषा में रिपीट कर रहे हो. ठीक है, पैराग्राफ के तरह अपने भाषा में रिपीट कर रहे हो. रीस्टेटिंग जो है एज इट इज रिपीट करना है. पैराफ्रेजिंग क्या है, उसको आप अपने तरीके से जो समझ में आया है उसको रिपीट कर रहे हो. रिपीट ही है लेकिन अपनी भाषा में रिपीट है, तो ये है पैराफ्रेजिंग. द नर्सेस पैराफ्रेजिंग गिव्स a feeling to the patient to test whether she has understood what he want to communicate. जो पेशेंट कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो नर्स ने समझ आया या नहीं, ये पेशेंट को समझ में आ जाएगा. पेशेंट सपोज कुछ बोला है, आपने उसको पैराफ्रेज करके बोला, अपने तरीके से बोला, पेशेंट उसको सुनने के बाद समझेगा कि नर्स समझ पाया है उसका प्रॉब्लम या नहीं. तो ये है पैराफ्रेजिंग. नाउ पिन पॉइंटिंग. The nurse pays attention to certain consistent statement made by the patient. She pinpoints the difference in what the patient says and what he does. Okay, pinpoint. छोटा बाला करके उसको पूछना है. Nurse बोल रहा है, so you and your father don't agree to the girl you want to be marrying. The nurse may point out, you say you are sad but you are smiling. पिन पॉइंटिंग क्या है, और एक एग्जांपल हम आपको बोल रहे हैं कि सपोज पेशेंट बहुत सारा बात कर रहे हैं, डिप्रेशन है, उसका कोई लव अफेयर था लेकिन घर का लोग उसको ये नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, उसको वो डिफर कर रहे हैं. तो देन व्हाट नर्स कैन डू, नर्स कैन पॉइंट आउट one point and say you are sad because you are not marrying the person you want to marry. That is the base of your problem, right? So you can tell me about that. So this is the pinpointing.
This is the pinpoint. Clear? Now linking. Linking means patient is saying certain thing and another thing. So two event को हम link करेंगे. The nurse try to link the patient's two event, feelings or persons together. Nurse, you fight with your wife because her friends visit her too frequently and you feel neglected. The patient is abusing her wife. ये एक event है. पेशेंट को गुस्सा आता है, उसका वाइफ का फ्रेंड उसको मिलने आता है, ये एक इवेंट है. पेशेंट को लग रहा है कि उसका वाइफ उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, ये एक इवेंट है. तो आप ये तीनों इवेंट को जोड़ रहे हैं, ये है लिंकिंग. Now question. Question in communication is used when the nurse wants clear information. Too many questions should be avoided. The nurse can use open-ended or close-ended question. Close-ended question here with the answer of yes or no, right or wrong. Open-ended question gives more chance for the patient to speak. आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन टू मच क्वेश्चनिंग शुड बी अवॉइडेड. टू मच क्वेश्चनिंग आपको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करिए. As try to use open ended question. Okay, close ended question जो होता है, open ended क्या है, आप क्या सोच रहे हो. ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, आप क्या सोच रहे हो, तो आपने उसका कोई लिमिट नहीं दिया. पेशेंट कैन चूज एनीथिंग शी वांट्स टू शेयर विथ यू. बट क्लोज क्वेश्चनिंग क्या होता है, आपका घर के लोग कल वीकेंड में आए थे, तो ये यस होगा और नो होगा. ठीक है, आप सुबह क्या खाया है, इसको आप जस्ट जो खाया है वो बोलिएगा. तो ये है क्लोज एंडेड, मीन्स जिसका एक वर्ड में आप आंसर दे पाओगे. दिस इज क्वेश्चनिंग. सो क्वेश्चन इन कम्युनिकेशन इज यूज्ड when the nurse want clear information. Too many questions should be avoided. That I have told already, that questioning should be avoided. When the patient is not answering to your other technique, then you can use questioning. You can use, if first try to use open-ended question. If the patient is not, आप आपकी चाइल्डहुड के बारे में बताओ, ओपन एंडेड क्वेश्चन है. अगर इसमें पेशेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप पूछोगे स्कूल कब जाना शुरू किया. ठीक है, स्कूल के फ्रेंड के साथ आपका दोस्ती था. तो ऐसे वाला करके क्लोज एंडेड करके आप टोटल इंफॉर्मेशन पाओगे. और आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हो, आपका चाइल्डहुड, आपका एजुकेशनल हिस्ट्री आप बताओ. तो ये क्वेश्चनिंग हम टू मच नहीं करेंगे, जितना हो सके उसको अवॉइड करेंगे. Now the focusing. So what is focusing? Focusing means we are concentrating on one single point. Okay. Patient is saying certain thing. Patient is alcohol abuse person. Patient is taking too much alcohol and the alcohol withdrawal symptom is there. Alcohol intoxication is there. But you want to focus on single point about the alcohol history. When you have started taking alcohol, how much you will take, okay, after taking alcohol, what you feel, why you want to continue alcohol, like that. You are concentrating only one single point, and that is the alcohol intake. You are concentrating on one single point about the marriage. What about the relation with your husband? Your husband is spending time with you. Tell me about the relationship with your husband. So this is the focusing. Now sharing. The nurse thinks about the patient other than time. She looks after him. She may evaluate whether their interaction are helping the patient or not. She may say, I was thinking of you yesterday. This is definitely a gesture of warmth and thinking
caring according to Indian culture. The patient may also feel that the nurse is caring for him. अगर हम सुबह में patient के साथ बात किए, एक दिन आप उसके साथ बात किए, after second day when you went to the ward, you will say to the patient that I was thinking about you, I was thinking about your problem, I was thinking that you are feeling homesick as you are not able to go to the home. So what patient will feel? Patient will feel warmth, patient will feel touched, and patient will feel that the person is thinking about him. So that is the sharing. That is the sharing. Now summarizing means after discussion, what we do, when we summarize, after, suppose I am taking that therapeutic communication class, and after the completion of the therapeutic communication class, what I will do, I will summarize the topic. During summarization, what I do, I give highlight on the main theme. What has been discussed, I want to highlight on the main theme, and that is the summarization. When you are talking with the patient, patient has shared so many information with you, and after the completion of the class, what you will say to the patient, that highlight portion of the patient illness, patient history, patient information, you will highlight the main point. Okay, after today's conversation, आपका ये था, आपका वो था, जो मेन टॉपिक है उसको आपने समराइज कर रहे हो, तो ये है समराइजिंग. In summarizing, the nurse highlight the main theme of what has been discussed. Summarizing is useful in focusing the patient's attention on what he has discussed. If you would like to add or delete anything. Okay, so these are the therapeutic communication technique. मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं. कहाँ है देखो तो, ये तो स्क्रीन है, एक ही था, उसको बोलो, ये तो स्क्रीन है, कोई तो नहीं है. Nobody is there. See, this is your screen. Again, I am repeating all the therapeutic communication. So, therapeutic communication क्या है? Therapeutic communication है, it's the interaction between the nurse and the patient with mutual understanding between them and to fulfill certain mutually set goal. ये है therapeutic communication. Okay? इसका थोड़ा purpose है, क्या है? To achieve self-realization, self-acceptance, self-respect, as well as you have to formulate good interpersonal therapeutic relationship, as well as you have to satisfy needs and to achieve realistic personal goals. Then you have to express your thought, client's thought, actually permit the client to express their thought truly, openly. Client का ego strength को improve करना है. Socialization and family interaction of the patient should be encouraged. And the communication problem अगर कुछ होता है तो उसको treat करना है, maladaptive behavior को treat करना है, and a new coping strategy को adopt करना है. तो therapeutic communication technique क्या होता है? Observing. We will observe the patient. Non-verbal communication we will observe. We know that communication is two types. One is the verbal communication, another one is the non-verbal communication. तो verbal communication क्या होता है? हम बोल रहे हैं वो है verbal communication, जो भी सुनाई दे रहा है. Non-verbal क्या होता है? Facial expression, आपका gesture है, आपका posture, ये सब है non-verbal. तो observation में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑब्जर्व करेंगे. लिसनिंग में हम पेशेंट जो बोल रहे हैं उसको हम, एनीथिंग एनीबॉडी वांट टू से? Listening. Then restating, restate whatever the patient has been saying, you have to restate that thing, you have to repeat that words. Then validate. The nurse used to confirm the accuracy of data. Patient has said something and you want to confirm it by saying it to the patient. Then reflecting क्या होता है? Patient has said something and underline emotion को आप बोलेंगे कि आप तो गुस्सा हो, आप तो सैड हो, कोई बात बोल रहा है लेकिन आप उसका जो अंडरलाइन इमोशन है उसको आप सरफेस में लाकर उसको बोलेंगे. तो ये है रिफ्लेक्टिंग. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्लैरिफिकेशन मांगना है. व्हाटएवर पेशेंट हैज सेड एंड व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड, यू विल maybe you cannot able to understood what patient is trying to say, so you want clarification. Please tell me about it more because I cannot able to understand why you are feeling sad. You just tell me more. So that is the clarifying.
पैराफ्रेजिंग मीन क्या होता है, रीस्टेटिंग जो है, रीस्टेटिंग जो सेंटेंस बोल रहा है उसको रिपीट करना है, लेकिन पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, वो रिपीट करना है लेकिन अपने आप अपना समझ के रिपीट करना है, जो आपने समझे हो उसको रिपीट करना है। तो पेशेंट सुनकर बोलेगा कि जो पेशेंट नर्स ने समझा है वो ठीक है या नहीं। पिन पॉइंटिंग, कोई छोटा वाला चीज को आप पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, छोटा वाला चीज को, आप सैड हो लेकिन आप हंस रहे हो, तो ये आपको पिन पॉइंट करना है। आप सैड हो क्योंकि समझ में आ रहा है कि आपके पेरेंट के साथ संपर्क ठीक नहीं है, तो दिस इज पिन पॉइंट। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, कौन सा ब्लॉक चल रहा है मैम प्लीज? कौन सा ब्लॉक चल रहा है? जी मैम। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ये चल रहा है। ब्लॉक 2 है, ब्लॉक ब्लॉक 2 है, ब्लॉक ब्लॉक 2 है। 2। देख रहे हैं ओके क्या ब्लॉक है, देख रहे हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ब्लॉक 2 चल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ब्लॉक 2 में थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन इन साइकेट्रिक कंडीशन, इसका जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है, ये आज आपको हम पढ़ाएंगे। यस मैम। ओके, ब्लॉक 2 का यूनिट 1 एंड यूनिट 2, therapeutic nurse patient relationship and communication technique. Now I am teaching you unit 2, then I will teach you unit 1. Okay, ओके मैम। so this is linking and questioning. We will ask question but try to avoid too many question. Focusing means आप कुछ कोई जगह पे फोकस कर रहे हो, मैरिटल हिस्ट्री जान रहे हो तो उसके बारे में बहुत सारा चीज आप पूछ रहे हो, तो ये है फोकसिंग। उसका चाइल्डहुड के बारे में, उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप उस ट्रॉमा के बारे में पूछना चाहते हो, तो ये है फोकसिंग। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन सिंगल पॉइंट। शेयरिंग मीन्स व्हेन पेशेंट को आप, शेयरिंग मीन्स पेशेंट को आप ऐसे बोलोगे कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। ओके, तो ये है द नर्स विल थिंक अबाउट द पेशेंट अदर देन टाइम शी लुक्स आफ्टर हिम, दिस इज द शेयरिंग। Then summarizing, whatever communication has been made to the patient, you will highlight the main theme and send it to the patient, that is summarizing. Now we will talk about non-therapeutic technique. कोई नहीं आ रहा है ज्वाइन करने के लिए, तो मैं स्लाइड शो में जा रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। Nobody is coming for admission, okay, so I am going for slide show. Now the non-therapeutic technique, certain technique we use during our nursing care, that is non-therapeutic. Suppose patient is saying something to you and you are reassuring, okay, you will be good after taking this medication, you will be at all okay, you can lead your social life, you can lead an occupational life. So like that you are reassuring, which is not, maybe patient cannot achieve, but you are reassuring, so that will give the false hope. So that is why reassuring is the non-therapeutic technique you should not use. You just be trustworthy and assure which is possible, that much we will assure to the patient. Which is not possible, that should not be. Like you are reassuring the parents about her about their mentally retarded child, that the mentally retarded child, if they can lead normal life as other child can do. So that is a reassured child, parents will get false hope. So this is non-therapeutic technique. Rejecting, patient is saying something and you are rejecting it, you do not want to communicate with the patient, so that is the rejection, non-therapeutic technique. Giving approval, okay, tomorrow you please let me go outside of this hospital, after that I will go and watch a movie, and you said okay, I will approve it. So this is giving approval, this should not be, this is the non-therapeutic technique, because it is not permissible for the ward. Patient is very much angry, patient wants to go home, patient wants to break away the door and go outside of the hospital, and you are approving that, okay, in the evening I will make you sure that you will go outside. So this is the false hope, do not do, this is non-therapeutic.
advising. Patient will not take your advice. Okay, so do not try to give advice. You can counsel the patient, you can counsel, you can say these are the option, you can choose one, but you do not advise. You choose this thing, you should do this thing. So we will not advise, we will just say these are the option available, you just choose it. Defending means patient का कोई अगर patient suppose a patient is having delusion of jealousy or delusion of infidelity. You know delusion of jealousy or delusion of infidelity. Infidelity means patient is having wrong information. Patient is suspecting that her partner is having made other relationship, extramarital relationship with other women, or the person will think that her wife is having extramarital relationship with other person. So what you are doing, you are defending the partner. पेशेंट को आप बोल रहे हैं नहीं नहीं आपका हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, आपका ये भूल धारणा है, ये आपका फॉल्स बिलीफ है, आप डिफेंड करें उसको हस्बैंड को, तो आपके ऊपर जो ट्रस्ट उसका था वो टूट जाएगा, बिकॉज दिस इज हिज डिल्यूशन ना. सो वो क्या समझेगा कि आप आपकी हस्बैंड के साथ मिले जुले हो, तो ये डिफेंड भी नहीं करना है. रिक्वेस्ट तो कैसे आप रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि नहीं तो सुनेगा. और रिक्वेस्ट भी नॉन थेराप्यूटिक है. समटाइम्स वी डू रिक्वेस्ट बट एक्चुअली दिस इज नॉन थेराप्यूटिक. belittling द फीलिंग ऑफ द पेशेंट. पेशेंट रो रहा है, क्यों रो रहा है, वो होम सिक हो रहा है, तो आप उसका जो फीलिंग्स है, सैडनेस है, उसको आप छोटा करके देख रहे हो. वो जो होम सिक हो रहा है उसको आप छोटा करके देख रहे हो. क्यों रो रहे हैं आप, कितना पेशेंट है देखिए, तो यहाँ पर भर्ती हुई है, तो ये आप उसका जो सैडनेस है उसके लिए तो ज्यादा है, लेकिन आप उसको छोटा करके उसको बोल रहे हो, तो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं डेवलप करेगा. तो दीज आर द नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक, इट शुड बी अवॉइडेड. सो व्हाट आर द नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक, somebody tell me. कोई तो बताए. Reassuring, rejecting, giving approval, advising, defending, requesting, belittling the feeling of the patient. ओके, समझ में आ रहा है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? So first is the genuineness. You must be genuine. Okay, you must show your genuineness, that you want to know, you want to communicate with the patient. So that genuineness is very much important for therapeutic communication. Openness means you are open. Patient, whatever the patient will tell, you will accept that thing. ये openness है, ठीक है. Honesty, you must be honest. You should not use any false hope. You should not reassure falsely to the patient. So you should be honest. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो भी आप honestly बोल रहे हो कि ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी अगर ये हो सके. पेशेंट बोल रहा है कि I want to call with my family member, please give me your phone, but it is not means allowed by the hospital protocol. So you should be honest. You should not give false hope that okay, I will let you phone call, or we can give your phone. This should not be done. Honestly, you will respond to the patient. Sincerity, active involvement, obviously accepting the client as he is, personal freedom to the client. अगर patient को मीन्स आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पेशेंट आपके सामने बैठा है, लेकिन पेशेंट इज नॉट फीलिंग गुड, पेशेंट वांट्स टू गो टू हर बेड एंड यू आर सेइंग नो नो प्लीज लेट मी फिनिश द कन्वर्सेशन, देन यू कैन गो. दिस शुड नॉट बी. You give freedom to the client. Okay, you go, you take rest, afterward we will talk with you. Okay, so these are the characteristics. This is depend on the genuineness, how we will be genuine. So openness, honesty, sincerity, active involvement, accepting the client as he is, and the personal freedom. These are the things that will show the genuineness. Then respect, you must give respect to the patient. How you can give respect? You should be warmth, means your voice should show that the patient will feel warmth, patient will feel touched by the patient. Positive regard, self-respect, respecting others, caring and concern, liking, valuing, worthfulness, non-judgmental, maintain confidentiality, active listening. These are the things which will show the respect. Okay, other thing in action dimension, what you can do, you can confront to the patient,
पेशेंट का अगर कुछ इमीडिएट नीड होता है उसको फुलफिल करेंगे, दैट इज इमीडिएटेसी। एंड नर्स सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने आप को डिस्क्लोज करना होता है। पेशेंट सेल्फ डिस्क्लोजर, पेशेंट अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो उसको नहीं डिस्क्लोज करना है। एंड इमोशनल कैथारसिस, अगर बोल रहा है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, जो अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे। नर्स के भी वही है। इमोशनल कैथारसिस क्या है? अगर इमोशनल कुछ पॉइंट है तो पेशेंट उसको बोलेगा, एक्सप्रेस करेगा, वो कैथारसिस है। एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन, दैट इज कैथारसिस। Role play, sometimes we do role play, how to talk with other patient or how to share their information, we make it role play and we can show it to the patient. Okay. Now so this is unit 2. Unit 2, clear to everybody? Therapeutic communication. See, we are talking about therapeutic communication. इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हमने क्या जाना? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, पर्पस एंड द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, which means observing, listening, risk-taking, validating, reflecting, providing information, clarifying, paraphrasing, pinpointing, linking, questioning, focusing, sharing, and summarizing. Non-therapeutic technique क्या होता है? Reassuring, rejecting, giving approval, advising, defending, and requesting and belittling the feeling of the patient. So these are the non-therapeutic technique. क्या characteristic होता है? जेन्युइननेस होता है, जेन्युइननेस के अंदर ओपननेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्सेप्टिंग द पेशेंट, गिविंग द पेशेंट पर्सनल फ्रीडम, दिस आर द जेन्युइननेस। रिस्पेक्ट में क्या होता है? वार्मथ, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ रेस्पेक्ट, केयरिंग, कंसर्न, लाइकिंग, वैल्यूइंग, दिस आर वी विल शो टू द पेशेंट। एंड कॉन्फ्रंटेशन, इमीडिएसी and nurse disclosure, patient self disclosure, emotional catharsis, and role play, these are we will do. Okay, the genuineness and the respect is the response dimension and this is action dimension. So these are all about therapeutic communication. अब तक ये टोटल यूनिट 2 है। कुछ ये है, दिक्कत है समझने में, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। कुछ दिक्कत है? बोलिए। नो मैम। टोटल समझ में आ गया सबका? हाँ। Okay. Then we are moving to the unit. No, madam. Okay. We are moving to unit 1, that is the therapeutic nurse-patient relationship. Clear? Okay. So what is therapeutic nurse-patient relationship? We have already discussed about the therapeutic communication. So what is therapeutic communication? It is the sharing of information. It is the interaction between nurse and patient with mutual understanding and to achieve mutually set goal. Okay. So through this therapeutic communication, you are building a relationship with patient. First day, the first 3 class, you just remember that I am your teacher, I am teaching you, and you are the student, you are learning what I am teaching. Okay, but today some of you are acquainted with me, I am sharing my PPT with you, WhatsApp में शेयर करें तो थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ये हुआ, मीन्स हम थोड़ा एक्वाइंटेड हुआ है। तो एक आपका 3 दिन जो पहले क्लास में था, अभी जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करके। सो द थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज द बेस। Okay, and building a therapeutic communication, you are building a relationship. Therapeutic communication के through you are building a relationship with patient,
and that relationship will be moved to achieve the mutually set goal. That relationship will be moved to achieve the mutually set goal, and that is the therapeutic nurse-patient relationship. See the definition: a meaningful ongoing communication with the client in an atmosphere of mutual respect and trust, whereby close helping relationship will be established, which allow the nurse and the client to work collaboratively. Collaboratively means patient and nurse, they will make this relationship, they will communicate with each other with mutual understanding, collaboratively. So this is therapeutic nurse patient relationship. एक relationship build करना है किसके बीच? Patient एवं nurse के बीच, and to achieve the mutually set goal. So that is the therapeutic nurse patient relationship. Clear to everybody? Relationship जो है build Yes. करना है, लेकिन वो build करने के लिए गोल है, जो गोल क्या है, एक म्यूचुअली सेट गोल है, उसको हम अचीव करेंगे, ये आपका ऑनगोइंग कम्युनिकेशन करने का करके. दिस इज नाउ द क्वालिटीज ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. क्या क्वालिटीज होगा एक थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अगर हम बिल्ड करेंगे तो उसका क्या क्वालिटी होगा? एक तो है जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा उसमें जेन्युइननेस रहेगा. जेन्युइननेस तो आपने देख लिया, जेन्युइननेस क्या होता है? ओपननेस होगा, आप सिंसियर होंगे, आपका एक्शन जो है वो पेशेंट एक्सेप्ट करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा पेशेंट, तो ये जेन्युइननेस के अंदर है. तो ये थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का क्वालिटीज में एक होता है कि जेन्युइननेस. सेकंड क्या होता है कि सिंसियरिटी रहेगा. ये जो रिलेशनशिप है शुड बी सिंसियर वन, and the respecting the client, the patient should be respected by the nurse. The nurse will give respect to the client. Whatever the client problem it is, we will provide respect to the client. Shows love and affection, but with boundary. We will show love and affection, but with boundary. Undue love and affection we should not show. Then concern, and you have to be active listener. So these are the essential qualities of therapeutic nurse patient relationship. Clear? So these are the therapy. तो जेन्युइननेस है, सिंसियरिटी है, रेस्पेक्टिंग द क्लाइंट है, शोज लव एंड अफेक्शन, कॉन्सर्न एंड एक्टिव लिसनिंग होगा. और क्या हो सकता है? एम्पैथी. यू नो व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी मींस वी आर पुटिंग आवरसेल्फ as the patient is thinking. We are putting ourselves in place of the patient, and what patient in that place can act with proper judgment, we will do that, we will think that. अगर पेशेंट इस सिचुएशन में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, तो उसको आप फील करना है, तो ये कर सकते हैं, तो इसको आपको फील करना है, तो वो है एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इनटू द पेशेंट्स एरिया. सेल्फ डिसिप्लिन होगा, अपने आप में डिसिप्लिन होगा, आप रोल मॉडल शो करोगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल गुड होगा. बात नहीं कर पा रहे हो पेशेंट के सामने जाकर मम्बलिंग कर रहे हो, तो पेशेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ बात नहीं करके उसको ठीक नहीं लग रहा है. तो वो गुड कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए. इमीडिएटली मीन्स अगर पेशेंट आपको कुछ बोल रहा है तो इमीडिएट आपको उसको concern दिखाना है. एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट प्रॉब्लम. So again, so what are the qualities of therapeutic nurse patient relationship? So first one is the genuineness. You have to be genuine. Already I have told you what may be the point you will regard that the patient the nurse is genuine in during the conversation. And then sincerity, respecting the client, shows love. And already I have told you that love and affection should be used judiciously. Okay, judiciously. You should not show that much of love and affection by which the patient can depend on you, and that will be the barrier of the nurse-patient relationship. So the judicious use of love and affection, concern, active listening is very important. And then
Empathy already I have told. Self-discipline, role model, good communication skill, immediation, exploration of the problem is very much important. Now, what may be the purposes of therapeutic nurse-patient relationship? What may be the purposes? क्या purpose हो सकता है जब हम nurse-patient relationship कर रहे हैं? What may be the purposes? Number one, in definition, I have already told you should have a mutually set goal, and that goal should be achieved during this nurse-patient relationship formation and termination. Okay, so you should have a therapeutic goal that should be achieved. Then we try to bring insight and behavioral change to the patient. Patient को आपको क्या हुआ है, आप क्यों यहाँ पर भर्ती हो? कुछ नहीं हुआ है, बाड़ी के लोग यहाँ पर भर्ती करके जा चुके हैं. So the patient is lacking of insight. Insight का 6 डिग्री होता है. Insight क्या होता है मालूम है? क्या है insight? Insight जो होता है थोड़ा करके लिख लीजिए insight. ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए. Insights जो होता है कि पेशेंट्स का सेल्फ realization, awareness regarding her own problem, and that is the insight. Insight means patient is aware about his or her own problem. Patient को क्या हुआ है, mental problem क्या हुआ है, वो पेशेंट को मालूम है या नहीं, ये है insight. Patients का जो awareness regarding her own problem is insight. Insight का 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है. Degree 1 means patient is denying that the patient is having any kind of mental illness. That is the degree 1, denial of illness. Okay, ये आप लिख लीजिएगा. Degree 1 is the denial of illness. Patient is denying. Degree 2 patient is sometimes denying, sometimes accepting. Sometimes बोल रहा है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए तो लेकर आए हैं. जब आप बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ये है सेकंड डिग्री इनसाइट. थर्ड डिग्री इनसाइट में क्या होता है, पेशेंट इज telling that because of that black magic I am suffering, I am having this kind of, I am having this headache, I am having certain kind of mental illness, but that is due to the black magic and they are conspirating against me due to that black magic. So they are referring to the certain outer thing, that is the degree 3. So degree 1 is the denial, degree 2 is sometimes accepting, sometimes denying, degree 3 is the thing that the patient is means throwing the causes of mental illness to the some outside factor. Degree 4, patient do not know what may be the cause, why they are suffering. I know I am having this kind of problem, but I do not know why this is happening. I am very well, but why this is happening I do not know. Unknown cause. Patient is knowing that the patient is mentally ill, the sign symptom of the mental illness, but doesn't know the cause. So that is the degree 4. Degree 5 क्या होता है, patient is able to know that the patient is having mental illness and the patient know the causes of the mental illness, patient know that the treatment is needed, patient know the follow-up is needed, but patient knowing everything is not doing anything. पेशेंट को सब मालूम है लेकिन नहीं कर रहा है कि वो ट्रीटमेंट करे, कि वो फॉलो अप में आए, नहीं कर रहा है रेगुलरली. तो ये है डिग्री 5. डिग्री 6 में क्या होता है, सब मालूम है, मेंटल इलनेस क्या है, मुझे सस्पेक्ट हुआ था, मैं ये सुन रहा था, कोई मेरे कान में आकर कुछ बोल रहा था, इसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है, ये हेरिडिटरी है, इसके लिए मुझे हो रहा है, पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं है लेकिन मेरा पापा का था तो इसलिए मे बी आई एम मोर प्रोन. सो कॉज भी मालूम है, ट्रीटमेंट भी मालूम है, फॉलो अप भी मालूम है, एंड पेशेंट इज ब्यूटीफुली डूइंग दैट. Patient is beautifully doing that, and that is the degree 6. So this is the insight. Okay, so insight is the awareness of being sick. The term we use, awareness of being sick. And 6 डिग्री है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, सब पढ़ के आना है. ठीक है, प्रैक्टिकल में जरूरी है.
So to bring insight and behavioral change, then mutual growth, mutual understanding develop करना है, realization, self acceptance, वो therapeutic communication के purpose में है ना, हमने बोला था कि self realization develop करना है, self acceptance develop करना है, self respect, self identity develop करना है. So these are the all purposes for the therapeutic nurse patient relationship also. So next, to identify appropriate nursing approaches. मैम एक बार डिग्री फिर से रिपीट कर दीजिए मैम इनसाइट डिग्री फर्स्ट डिग्री जो है वो डिनायल है. ओके, आई एम डिनाइंग दैट आई एम हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ मेंटल इलनेस. आई एम डिनाइंग, नो आई डू नॉट हैव एनी मेंटल इलनेस. डिग्री 2 क्या है? समटाइम्स वी आर एग्रीइंग, sometimes we are saying that no, I do not have any problem. Sometimes I'm saying okay, I maybe have some problem, my father has bring me here, but I do not know what it is. So ये है धुआंसा, कंफ्यूज स्टेट. ये है डिग्री 2. डिग्री 3 में क्या आता है? पेशेंट को थोड़ा थोड़ा मालूम होता है कि ये उसका मेंटल प्रॉब्लम है, ये सब हो रहा है, उसको एंजाइटी हो रहा है, उसका हेडेक हो रहा है, ये मेंटल प्रॉब्लम के लिए हो रहा है. लेकिन वो बोल रहा है कि ये हो रहा है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक किया है, मेरे इन-लॉज ने ब्लैक मैजिक किया है. तो वो थोड़ा आउट फैक्टर के ऊपर, अदर फैक्टर के ऊपर थोप रहा है कॉज को. तो ये है डिग्री 3. ट्रीटमेंट पता नहीं उसको, फॉलोअप पता नहीं उसको, लेकिन मेंटल इलनेस का साइन सिम्टम पता है और कॉज को वो इसके ऊपर थोप रहा है, थोड़ा आउटर फैक्टर के ऊपर. डिग्री 4 में साइन सिम्टम पता है उसको सब, लेकिन कॉज पता नहीं है. बोल रहा है कि पता नहीं क्यों ये हो रहा है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जानता है, नहीं जानता है. ये डिग्री 4. डिग्री 5 में सब पता है, कॉज पता है, साइन सिम्टम पता है, ट्रीटमेंट पता है, फॉलोअप पता है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहा है. ट्रीटमेंट पता है कि हर रोज उसको दवाई खाना है, लेकिन नहीं खा रहा है. फॉलोअप में आना है, लेकिन नहीं आ रहा है. तो ये है डिग्री 5. डिग्री 6 क्या है? सब पता है, सबको कर रहा है, ठीक से दवाई खा रहा है, ठीक से फॉलोअप में आ रहा है. सो दीज आर द ऑल डिग्री 6. Now coming to other purposes, that is to identify appropriate nursing approaches. developmental goal को achieve करना है, जो प्रॉब्लम क्लाइंट का है उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है, पेशेंट को कम्युनिकेट फ्रीली करने के लिए हेल्प करना है. ये सब है पर्पसेस. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट वे द कैरेक्टरिस्टिक पर्पस. वो कैरेक्टरिस्टिक आपका थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का पता है, तो वे भी एक ही है. We have to provide self and therapeutic environment to the patient. We have to provide certain communication by which patient will self-realize, and then self-acceptance will be there, then genuineness will be there, self-respect will be there. ऐसा रिलेशनशिप उसके साथ फॉर्म करना है कि पेशेंट को सेल्फ रियलाइजेशन हो, पेशेंट को सेल्फ एक्सेप्ट, अपने आप को एक्सेप्ट करे पेशेंट. And the nurse should be genuine one. The nurse should give respect to the patient. पर्सनल आइडेंटिटी का क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी होगा. ये है कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये पीपीटी हम दे देंगे, उसमें से आप देख लेना. नाउ द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल होगा थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का? क्या प्रिंसिपल होगा? So what may be the principle of therapeutic nurse-patient relationship? The first one is treat the client as an individual. You must treat the client as an individual. You should not involve the patient in a group. सबका ये होता है, पेशेंट कुछ information is sharing, her problem is sharing, and you are saying, okay, this thing happens to everybody. You do not have to worry. No, you have to believe that the patient is an individual one, and you have to treat the patient as an individual. Okay, accept client as he is. Patient जो है ऐसे ही accept करो. Aware total need of the patient. What may be the patient's need? That you have to be aware about that. Nurse understand herself as well as client's need. Nurse अपने आप को understand करेगा, उसके साथ patient को भी understand करना है. Emotional environment important है. Objectivity has to be maintained. Means partiality नहीं करेगा. ऐसा patient के साथ ऐसा behavior, another patient के साथ another behavior. No, objectivity should be maintained. You should be impartial one. So what may be the principle? Treat the client as an individual, accept the client as he is,
aware total need of the client, nurse understand herself and client's need, motive, desire, feelings, etc. Emotional involvement जरूरी है, objectivity has to be maintained. Then your behavior should be consistent, means आज today you are behaving with the patient in one mode, and tomorrow you are showing another type of behavior to the patient. Okay, you are not showing genuineness, you are not showing some respect to the patient. So that should not be, your behavior should be the consistent one. You have to set the limit and goal. लिमिट को आपको सेट करना है. Then encourage the client's feeling, therapeutic understanding, honest and open communication is needed. Means लिमिट सेटिंग क्या होता है? एक लिमिट सेटिंग होता है. पेशेंट बहुत सपोज वन पेशेंट इन द वार्ड he or she is shouting and is singing and dancing in acute manic stage. Okay, in the morning, from the early morning, he has started singing in loud voice. So you will say to the patient that this type of behavior is not accepted by the ward. You should lower your voice, and we will plan one relaxation and one recreation therapy. There you will sing lower tone, but now it is early morning, other patient is sleeping, so you should not raise your voice. So you are limit setting for the patient, you are setting the limit for the patient, that is needed. These are again other principle. Suppose active listening करना है, discuss on fear with the qualified person, realistic approach, trust, confidence, ये सब जरूरी होता है. ठीक है. This is the important part of nurse patient relationship. बहुत अच्छा से इसको समझ जाइएगा. अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिएगा जरूर. ठीक है, पूछ लेना, लेकिन नहीं समझना, ये समझ कर means understanding is important, must. So the nurse patient relationship phase, 4 phases are there. First one is the pre-interaction phase. Second one is the introductory or orientation phase. Third one is the working phase, and the fourth one is the termination phase. So the first one is the pre-interaction phase. What we will do in pre-interaction phase? Pre-interaction phase means you have heard about the patient, that this kind of patient is coming to your ward, this kind of patient you are going to deal with, and you are preparing yourself about the patient, about your own emotion. That is the pre-interaction phase. See, pre-interaction means a phase which a nurse goes through before the actual interaction with the patient. अब actual interaction नहीं हो रहा है, लेकिन होने के पहले पेशेंट के बारे में आप सुन रहे हो कि ऐसा वाला पेशेंट आ रहा है, तो अपने आप को आप क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो. तो ये है प्रिपरेशन फेज. बेड प्रिपेयर कर रहे हो, वार्ड प्रिपेयर कर रहे हो, बेडेड टिकट प्रिपेयर कर रहे हो. ऑल द एक्टिविटी विल डन इन द प्री इंटरेक्शन फेज. So this phase begins when the nurse is assigned a patient to develop therapeutic relationship with him till she goes to him for interaction. Next, the nurse collects data or information about the client and the family member from client chart, OPD record, assess the total need and demand of the patient. Plan the activity to reach the goal. Clear to everybody? So what is pre-interaction? Pre means before, interaction means interaction. You have assigned one patient to interact with one patient. Before interacting with the patient, you have planned your own activity, you have got your own emotion, you have prepared how to deal with the patient, you have prepared all the unit. This is the pre-interaction phase. What task you have to do in pre-interaction phase? Some exam में आता है, therapeutic communication technique आता है, बहुत आता है, very much important therapeutic communication technique. एंड थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी तो आता ही है. सो टास्क ऑफ प्री इंटरेक्शन फेज क्या होता है? द नर्स एक्सप्लोर्स हर फियर्स एंड एंजाइटी, सेट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर द इंटरेक्शन फेज, takes the help of the client supervisor to overcome fear. So these are the tasks.
अपना जो फियर और एंजाइटी है नर्स वो एक्सप्लोर करेगा, इंटरेक्शन फेज के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेगा एंड क्लाइंट के थ्रू माने क्लाइंट सुपरवाइजर के थ्रू क्लाइंट का जो फियर है उसको ओवरकम करना है। तो ये है टास्क। Next phase is the introductory or orientation phase. Okay, you have received your patient. Now what you will do after receiving your patient, you will ask the name of the patient, you will ask the age of the patient, where his home, from where he has come to the ward, and you will introduce yourself to the patient. So this is the introductory or orientation phase. Introductory or orientation phase begins when the nurse goes to the patient's introducing herself and get introduction about him. The nurse and the patient, who are stranger, meet for the first time and become acquaintance. And become acquaintance means they means mix up with each other. And the orientation phase ends when the nurse and the patient begin to accept each other as a unique human being. जब ये जो अपने आप को जो ओरिएंटेशन का इंट्रोडक्शन का जो पाला है ना, ये जब खत्म हो जाएगा, देन द थर्ड स्टेज विल स्टार्ट. जब तक ये चलेगा इंट्रोडक्शन, तब तक ये इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज चलेगा. Clear to everybody? Now, Yes, ma'am. what are the tasks of introductory or orientation phase? First is the establishment of contact. Contact करना है. Then you have to act. ये थोड़ा गलत है. Then talking with the patient. Patient के साथ बात करना है. तो ये है आपका task in introductory phase. पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो साइन सिम्टम है, उसको गैदर करना है. तो ये है इंट्रोडक्टरी फेज. नाउ कमिंग टू द वर्किंग फेज और फेज ऑफ इमर्जिंग आइडेंटिटी. ये मेन फेज है वेयर यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड यू विल अचीव द म्यूचुअली सेट गोल. मैं बार बार बोल रही हूँ कि पेशेंट एवं नर्स के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा और एक म्यूचुअली सेट गोल होगा जो अचीव करना है थ्रू दिस रिलेशनशिप, थ्रू दिस कम्युनिकेशन. ये जो काम ये है एक्ट है, इसको हम अचीव करेंगे दिस वर्किंग फेज में. सो वर्किंग फेज और फेज ऑफ इमर्जिंग आइडेंटिटी ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टार्ट्स when the nurse and the patient are able to overcome the barrier of orientation or introductory phase. ये तब शुरू होगा जब आप ओरिएंटेशन फेज एंड इंट्रोडक्टरी फेज से निकल के बाहर आ जाएंगे. During this phase, the nurse and the patient actively work on meeting goal. अभी मैंने बोला ना कि जो गोल हमने सेट किया है उसको अचीव करना है, which they had established during the orientation phase. Characteristic feature of this phase are that the nurse is able to overcome anxiety as well as the patient's fear of the unknown is decreased. Patient का जो fear of unknown है वो भी decrease होगा, nurse का जो anxiety है वो भी overcome nurse कर पाएंगे, and the mutually set goal which the nurse and the patient has mutually set in orientation phase, that should be fulfilled. Until unless it is fulfilled, until unless the patient is discharged from the hospital, working phase will go on. Now the task. What may be the task? The nurse collect data in detail from primary and secondary source. Primary source क्या है? Patient है. Secondary source क्या है? Patient. Informant. Yes. Then you have to identify the need of the patient. Okay. So first one is the collection of the data and identify the need of the patient. Then the nurse assists the patient to identify his or her problem. Nurse assist करेगा patient को to identify उसका problem क्या है. Then she will help the patient to communicate, to socialize. Okay. Nurse will help the patient to communicate with other patient. Nurse will encourage the patient to socialize with other patient. Nurse will help the patient to find the solution of his problem. That is the main thing. The patient is having certain kind of problem, and that should have an
अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नर्स पेशेंट को हेल्प करेगा. देन शी एनकरेज द पेशेंट टू यूज न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर. अगर कुछ पैटर्न ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है तो नर्स विल एनकरेज द पेशेंट टू अडॉप्ट न्यू काइंड ऑफ बिहेवियर. Then the nurse help the patient to understand that he has a significant role in his treatment. कोई significant role, उसका treatment का जो significant role है, sunshine on the mountains and a breeze that goes. Sorry. So what may be the task of working phase? The first one is that the nurse collects data about the patient, from the patient as well as from the informant. The nurse will help to identify his problem, help the patient to communicate, help the patient to socialize, and alternative solution को ढूंढने में help करेगा. New pattern of behavior अगर कुछ है तो उसमें help करेगा. ये सब है. अभी आ रहा है, क्लास खत्म होने वाला है. शशिकला, क्लास खत्म होने वाला है, अभी आ रहे हो? Now coming to the termination phase. So 4 phases are there in therapeutic nurse patient relationship. The first one is the pre-introduction phase. In pre-introduction phases, you have not received the patient, but you have heard about the patient, you have heard about the sign symptom of the patient, you have heard about how to deal with the patient. So now you are preparing your own anxiety and your own self को prepare कर रहे हो, and also how to deal with the patient, how to prepare the unit, all these things you are preparing. That is the pre-interaction phase. In orientation phase, you are orienting with each other. The nurse will communicate with you, with the patient, as well as the patient will communicate with the nurse. They will share their primary information. They will build their trust relationship with each other. So this is the therapeutic orientation phase. Then the third phase is the working phase. Working phase साक्षी नहीं होगा 2 बजे के पहले. चाबी लेना था কি করব বলো, আমার তো সকালে ওয়ার্ড আছে. এখন উপরে অনুরাধা ম্যাম না, সব নয়, সব কেন দেখে যা, শুধু ডোরের টেপ. আর এনজিটিউ ফিডিং এর ওরা বলছিল নাকি আলমারি চাবিগুলো রাখবে. আমি যখন যাব তখন বের করব. ঠিক আছে, এনজি টিউবের আমি সব নিয়ে এসেছি, কিছু লাগবে না. নিউয়ার্ক থেকে এনজি টিউবের জন্য নিয়ে এসেছি, আর আইভিন প্রেশার নিয়ে আসলাম বোধহয়. নিয়ে যাবো আমি তখন, এখন নিয়ে যাবো.
Okay, so the working phase means when the introduction phase and the orientation phase has completed, then the working phase has started. Working phase actually the goal accomplishment phase. You are having the mutually set goal and you want to achieve that mutually set goal with the patient, and that is the working phase. Whatever problem the patient is having, whatever information you want to take, all has been done in working phase. The last one is the termination phase. Termination means you have accomplished your goal. Patient has accomplished her goal. Patient is now communicating. Patient is now discharging. So now the termination phase has come. You have to bid goodbye to the patient. Okay, so the termination is very important. So termination phase is also called the resolution phase or end phase. The termination phase begins during the orientation phase. ओरिएंटेशन फेज से ही टर्मिनेशन फेज शुरू हो जाएगा. आपको पेशेंट को समझना है कि आप जितने दिन यहाँ पर रहेंगे उतने दिन हम आपके साथ बात करेंगे, घर में जाकर बात नहीं हो पाएगा आपसे. In the orientation or introductory phase, the nurse develops pact or contract with the patient. In the pact, the nurse explains the patient her purpose of interacting with him or he, and termination the relationship. The main objective of the termination phase is to bring the therapeutic end of the nurse patient relationship. Termination phase में जो relationship आपके साथ patient का build हुआ है उसको खत्म करना है. Okay? तो ये है termination phase. इसका task क्या होता है? Bring therapeutic end to the relationship. ये फर्स्ट थिंग है कि जो therapeutic relationship we have to bring the therapeutic end. Then review the feeling about the relationship. पेशेंट बोल रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन हो रहा है, घर में जाके आपको फोन करेंगे, आप मेरे साथ बात करेंगे, तो आपको रिव्यू करना है, आपको बोलना है कि नहीं हम बात नहीं कर पाएंगे, ये जब आप यहाँ पर रहेंगे उतने दिन आपके साथ बात कर पाएंगे. तो जो फीलिंग है, सैडनेस है, उसको आपको डील करना है. देन इवैल्यूएट करना है कि जो गोल आपने सेट किया था पेशेंट के लिए वो अचीव हुआ है या नहीं. देन मीटिंग फ्यूचर नीड का एस्टेब्लिश करना है, मैकेनिज्म फॉर मीटिंग फ्यूचर थेरेपी नीड. फ्यूचर थेरेपी के लिए भी तो कुछ नीड होगा ना, तो उसको आपको एस्टेब्लिश करना है, कैसे उसको आप करेंगे. तो ये है टर्मिनेशन फेज. तो 4 फेज क्या है? फर्स्ट वन इज द प्री इंट्रोडक्शन फेज, सेकेंड वन इज द ओरिएंटेशन फेज, third one is the working phase, and the fourth one is the termination phase. Everybody is able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब सुन रहे हैं कि 4 और 5 लोग सुन रहे हैं? मुझे तो लग रहा है 4-5 लोग सुन रहे हैं, आप बाकी सब काम कर रहे हैं. सुन रहे हैं मैम, सुन रहे हैं. सुन रहे हैं मैम. सुन रहे हैं मैडम. Okay, now coming to the barrier to therapeutic communication. What is the barrier of therapeutic communication? क्या therapeutic communication barrier means? therapeutic communication ठीक से नहीं हो रहा है, इसका barrier क्या है, और therapeutic nurse patient relationship का barrier क्या है, ये दोनों चीज अलग है. therapeutic communication की barrier क्या हो सकता है? Not listening properly. You are not listening what the patient is saying. You are not listening what the patient is trying to say. That is the barrier. Maintaining dominance. You are dominant. You are saying that I'm. এটা বোধহয় 5 বার ফোন করলো. Now these are the therapy पास है. these are the घर से ले लेंगे. mute yourself. Mute yourself.
Now, what may be the barrier to therapeutic communication? You are not listening properly. That is one thing. You are being dominant. So patient is feeling less power. Patient feeling fearful. Patient is becoming anxious. So patient is not sharing because you are dominating. Then giving reassurance. I have already told you that reassurance is a non-therapeutic technique. Okay, giving false hope is a non-therapeutic technique. So do not give that thing. If you give that thing, that will be the barrier. Too much probing into personal matter. Already you are trying to, patient is not want to disclose anything, but you are trying to probe that thing. You want to disclose that thing. The patient will become resist. Patient will make one shield around him because you are too much probing to her. Then without listening to the client's feeling and problem, too much advising the client is not good. Utilizing denial process in therapeutic nurse patient relationship. So these are the barrier. বললাম না আজকে দুটো পর্যন্ত ক্লাস আছে, থেকে চলে যাও, করে দেবো পরে, দুটোর পরে আসবে, কেউ আর এখন দুটোর আগে আসবে না। Now, these are the barrier to therapeutic communication. Now we are moving to therapeutic nurse-patient relationship. So these are the therapeutic impasse or the barrier to therapeutic nurse-patient relationship. Several barrier is there in forming therapeutic nurse-patient relationship. Suppose you have making communication with one person and she is an old one and she is saying that you are just like my granddaughter, okay, and I think you are just so sweet, just too cute, and the patient is identifying you as her granddaughter and she is depending on you much more. So this is called the transparency, and this will resist forming of the good therapeutic nurse patient relationship. Okay, so this is transparency. So what is transparency? Transparency is an unconscious response whereby the client identify the nurse with some significant other. Client identify कर रहा है किसके साथ, अपने ग्रैंडडॉटर के साथ आपको, तो क्या कर रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, सब समय आपको मांग रहा है, आपको फोन करना चाह रहा है, तो ये थेरेप्यूटिक इम्पैस है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का बैरियर है। ये जो फीलिंग एंड एटीट्यूड है ये ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स नर्स। सो दिस इज द थेरेप्यूटिक इम्पैस। इसका ऑपोजिट एक होता है काउंटर ट्रांसपेरेंस। काउंटर ट्रांसपेरेंस क्या होता है? एक अल्कोहलिक पेशेंट वार्ड में एडमिट हो रहा है एंड द नर्स विल गिव केयर एंड नर्स विल फॉर्म रिलेशनशिप विद दैट अल्कोहलिक पेशेंट, बट द नर्स हैज बैड हिस्ट्री अबाउट दिस अल्कोहलिक पेशेंट, अल्कोहलिक सम फैमिली मेंबर, तो उसके साथ कोई बैड रिलेशनशिप, उसको कोई बैड फीलिंग है वो अल्कोहलिक कोई फैमिली मेंबर के लिए, तो वो अल्कोहलिक फैमिली मेंबर के ऊपर जो फीलिंग है ये ट्रांसफर हो रहा है पेशेंट के ऊपर। सो पेशेंट, द नर्स विल डील विद द पेशेंट इन वेरी हार्श वे। द नर्स विल नॉट शो एनी जेन्युइननेस, द नर्स विल नॉट शो एनी ऑनेस्टी, द नर्स विल नॉट शो एनी वार्म। सो ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नर्स का जो फीलिंग्स है वो ट्रांसफर हो रहा है पेशेंट के ऊपर, कोई बैड फीलिंग कोई गुड फीलिंग वो भी ट्रांसफर हो, तो ये है काउंटर ट्रांसफरेंस। ठीक है, तो ये थेरेप्यूटिक इम्पैस है। रेजिस्टेंस क्या है? पेशेंट इज नॉट रेडी टू ओपन हरसेल्फ और हिमसेल्फ एंड दैट इज द रेजिस्टेंस। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड कम्युनिकेशन, यू ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द पेशेंट, यू ट्राइंग टू बिल्ड rapport with the patient, you trying to build trust relationship with the patient, but the nurse cannot able to do because patient is not opening himself or herself. Patient is resisting the emotion given by the nurse. So that is the resistance that will block the forming of nurse patient relationship. So resistance, see what is written here? Resistance occurs when patient consciously or unconsciously conceals the problem, that is acting out, forgetful or be silent। आपके साथ बात नहीं करेगा, बोल रहा है कि मैं भूल गया हूँ, नहीं बोल रहा है, ऐसे वाला बोलेगा। Then nurse can help client to overcome resistance by pointing out their progress and state। तो आप क्या करोगे? रेजिस्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप बात करो, ऐसा ही बात करो, सोशल कम्युनिकेशन करो। थेरेप्यूटिक नहीं करना है तो सोशल कम्युनिकेशन करो, उसके थोड़ा 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 करके पेशेंट अपने आप को ओपन करेगा। देन द रेजिस्टेंस विल बी गॉन। Then the resistance, transparency, counter transparent, then gift giving, it is happening in the world। जाने के बाद पेशेंट आपको गिफ्ट दे रहा है कि आप ये ले लो,
ओके और आप पेशेंट को गिफ्ट दे रहे हो, ग्रैंड पेरेंट बोल रहा है, ग्रैंड मदर बोल रहा है, तो आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट गिविंग ये ब्लॉक करता है टर्मिनेशन फेज को। टर्मिनेशन फेज नहीं होगा अगर आप गिफ्ट गिविंग करोगे। बाउंड्री वायलेशन मीन्स क्या है, पेशेंट एंड नर्स के बीच एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। पेशेंट जब वार्ड में रहेगा, नर्स जब वार्ड में आएगा, that time the relationship will be built, that time the communication will be made. But after the ward after that, again in the evening, the nurse will come to the ward, the nurse will communicate with the patient has given phone number to the nurse, and the nurse has given phone number to the patient. So this is boundary violation. You are having one boundary and professional boundary, and you are crossing that boundary. That is the boundary violation. It will affect the termination phase, so be aware of it. So it occurs when a nurse goes beyond the established therapeutic relationship and enters into a social, economical, or personal relation. I have told you now, after completion of the ward, again in the evening, the nurse will come to the ward, the nurse will phone the patient will ring the nurse. So that is the social and personal relationship में enter कर रहा है, तो ये है boundary violation. Okay. Now overcoming the therapeutic impasse. Therapeutic impasse को कैसे आप overcome करोगे? First one is that be prepared to be exposed to powerful emotional feeling. Okay, अपना जो emotional feeling है, आप prepare हो जाओ उसको deal करने के लिए. अगर कोई hatred feeling भी है towards the patient, you should not show. You should guard yourself. Okay, so you must be prepared about your own personal feeling as well as patient's personal feeling. Nurse must have knowledge about impasses. Okay, if I know that giving is not allowed, boundary violation is not allowed, if you know, then only you can resist yourself. Okay, so you must have knowledge about impasses. The reason behind the behavior must be explored. Why the patient is depending on you, why the patient is always calling you, that you have to explore. Means transparency, why the patient is having transparency, that you have to explore, and you have to cut it out. Then try to solve the problem, that is the cut out of the problem. So these are the overcoming therapeutic impasse. This is the end of class, Arjun. Now you will know what has happened in the class. Now we'll summarize the therapeutic communication. So this is the definition of therapeutic nurse-patient relationship. What is the definition? A meaningful ongoing communication with the client in an atmosphere of mutual respect and trust, whereby close helping relationship will be established, which allows the nurse and the client to work collaboratively. So this is the definition of therapeutic nurse-patient relationship. Then what may be the qualities? You see, genuineness, sincerity, respecting, shows love and affection, concern, active listener, and the empathy, self-discipline, role model, good communication skill. These are the qualities. Then purposes, what may be the purposes? That you have to build a therapeutic relationship to achieve a goal. So the mutual goal you should have to achieve. Then to bring insight, already I have told you now what is insight, what may be the degree of insight. So please learn that thing. So to bring insight and behavioral change, then you have to develop the mutual growth. Then you have to promote the realization, self-acceptance. These are all I have discussed. Only I am summarizing. Then identify the appropriate nursing approaches. You have to achieve the goal. Then you have to assist the client to identify the present problem and so that the patient can communicate with other person freely. Then characteristic. What may be the characteristic? That to provide safe and therapeutic environment. Then self-realization is important. Then self-acceptance is also important. Genuineness, self-respect,
पर्सनल आइडेंटिटी को क्लियर सेंस होना चाहिए, पर्सनल इंटीग्रेशन, देन यू हैव टू फॉर्म इंटीमेट इंटरडिपेंडेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड हिज फैमिली। रियलिस्टिक गोल को आपको फॉर्म करना है, उसको अचीव करना है। ऐसा गोल आपको नहीं सेट करना है कि जो अनरियलिस्टिक है। The mutually set goal I am talking about already, that the mutual understanding and mutually set goal is very much important in therapeutic nurse-patient relationship. But ये जो mutually set goal आप करेंगे ना, ये रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा कुछ आपको सेट नहीं करना है कि वो अचीव नहीं हो पाए। देन फंक्शनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, देन स्पेसिफिक इंटरेक्शन और प्लान विद स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, ये सबको अचीव करना है। Then principles. What may be the principles of therapeutic relationship? See, treat the client as an individual, accept the client as he is, aware total need of the client, then nurse understand herself and client's need, then emotional involvement, then objectivity, maintain good consistency, self-appropriate limit and goal, encourage the client feeling, অলরেডি পোর্টাল খুলে গেছে আমাদের। হ্যাঁ, তোমাকে তুমি পনেরোকে নাম্বার দিলে পনেরো আমি নিউট্রিশন যোগ করে পনেরোকে নাম্বার দিলে আমি তার থেকে বার করবো। হ্যাঁ, বলো বলো। Okay, now engage in active listening, then discuss on fear with qualified person, then realistic approach, then establish trust and rapport. These are the principles. Then phrases, 4 phrases are there. Then pre-interaction phase, introductory or orientation phase, working phase, termination phase. These are 4 phases. Pre-interaction already I have told. Before receiving the patient, you are communicating, you are accepting your own feeling, you are accepting the patient mentally, that kind of patient you will receive, you will preparing the environment. This is pre-interaction. ओरिएंटेशन क्या है, पेशेंट को आपने रिसीव किया है, नाउ द बातचीत शुरू करने से पहले क्या होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो इंट्रोडक्शन, patient का introduction as well as your introduction is very much important in your orientation phase. Then the main task will be done in working phase. When the pre-interaction and the introduction phase has been ended, then the working phase has started, where you will achieve the patient's mutually set goal. That means you will explore the patient problem, you will explore the solution, you will explore the cause of mental illness, you will explore that the patient should gain insight over his or her problem. So these are the things, these are the tasks you will do in the working phase. Then termination phase में इसको खत्म करना है। थोड़ा बहुत टाइम बैरियर है थेरापीटिक कम्युनिकेशन के लिए as well as थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के लिए। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसपेरेंस होता है, काउंटर ट्रांसपेरेंस होता है, गिफ्ट गिविंग होता है एंड द बाउंड्री वायलेशन होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, थोड़ा बहुत टाइम है, अभी 15 मिनट्स है, अगर कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैम बाउंड्री वायलेशन का एक बार फिर से डिटेल बता दीजिए। बाउंड्री वायलेशन क्या है कि आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्या है, आप पेशेंट के साथ बात करना शुरू कर रहे हो एंड यू आर हैविंग वन गोल दैट आई विल एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लोर द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये आपका गोल है, ये इसके लिए आप नर्स पेशेंट रिलेशनशिप और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या आप कर रहे हो कि उसका पर्सनल स्पेस में आप इन्वेट कर रहे हो, कि उसका पर्सनल स्पेस में आप जा रहे हो जो आपका गोल के साथ मैच नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसके उस पर्सनल स्पेस में घुस रहे हो, तो उसका जो रिलेशनशिप, एक पर्सनल रिलेशनशिप आपके साथ फॉर्म हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप आपके साथ फॉर्म हो रहा है। घर जाने के बाद भी यू आर रिंगिंग द पेशेंट, घर जाने के बाद भी पेशेंट इज रिंगिंग टू यू, घर जाने के बाद भी इवनिंग में आप पेशेंट के पास आ रहे हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो ये सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप आर डेवलपिंग। So this is the violation of the boundary. Therapeutic relationship का एक boundary होता है, उसके ज्यादा हम जा नहीं सकते। जो गोल आपने सेट किया है उसको फुलफिल करना ही आपका एक लक्ष्य होता है। तो social and that personal relationship should not be allowed in therapeutic relationship. It will cause problem. So, but you are crossing the boundary. That thing is the boundary violation. Okay. Yes, sir. और कुछ प्रॉब्लम है किसी को?
इसके बारे में तो बोलिए, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कल के क्लास के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन कर पाए। 15 मिनट्स है। Ma'am, definition of insight. Definition of insight is the awareness of being sick. The patient will be aware about his own illness. The patient will be aware about his own mental illness is the insight. Awareness of being sick. Okay? Okay, ma'am. Okay. इसका कितना Thank you, डिग्री ma'am. होता है? 6 6. होता 6 है। degree होता है मैम। हाँ, 6 degree में फर्स्ट डिग्री क्या है? Denial. डिनाई करना, Deny or sometimes accepting. Sometimes accepting, sometimes is denying. not accepting and did not agree. Then Yes, degree ma'am. 3, patient is Black aware magic. about his illness. External cause. Thinking that any external cause like black magic. Referring the causes to the external factor. Yes. And the 4th degree, Know unknown everything cause. but don't know treatment about Patient it. knows Yes. about Don't know silent follow-up. symptoms, but he Yes. does not know about the causes of the mental illness. हाँ, unknown cause के लिए हो रहा है. And the degree 5, patient. Patient know everything Everything, but not but doing anything. Okay, not degree doing 5. anything. Okay, just write one point in degree 5. Degree 5 is also called intellectual insight. Degree 5 के पास में आप थोड़ा ब्रैकेट करके लिख लीजिए intellectual insight. Okay, so the degree 5 is intellectual insight and the degree 6 is emotional insight. So the degree 5 is intellectual insight, degree 6 is emotional insight. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. मैम ये सारा कंटेंट बुक में नहीं किया है। बुक में नहीं पाओगे, कैसे बुक में? मैम प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, obviously I will share. Yes, ma'am. ma'am. Share कर दीजिए, थैंक ma'am. यू मैम, प्लीज मैम शेयर। पीपीटी मिल जाएगा ना? पीपीटी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, so we are moving to the next topic. Tomorrow's topic I will introduce something. Okay, now schizophrenia. Okay, tomorrow we will start with the topic schizophrenia. Today I will just introduce that topic. What is schizophrenia? क्या होता है schizophrenia? अभी इसको हम Split of mind. Split of mind. Split of mind is the old concept. Okay. Split of mind is the old concept. What is schizophrenia? Already you know schizophrenia is the term which has been coined by Swiss psychiatrist Eugen Bleuler in 1908. Okay. It is from the Greek word schizos. Schizo means split and phren means mind. 1908 में यूगन ब्लूअर ने फर्स्ट coined the term schizophrenia, where he has split the schizophrenia in two parts, that is schizo means split and phren means mind. So what is schizophrenia? In ICD-10, where it will come in F20. Okay, from F20 to F29 is the schizophrenia. थोड़ा लिख लीजिए आप schizophrenia. हम maybe I will just discuss from your book. You are having your book, so I will just discuss it, or I can show you the PPT also. Let me see. So schizophrenia क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको? ये एक psychotic disorder है और एक neurotic disorder है. What is psychosis and what is neurosis? Already I have told you na in beforehand 3 classes. What is psychosis? Psychosis is the severe mental disorder where reality orientation is hampered with delusion and hallucination. In psychosis, the patient will have delusion and hallucination, and the absence of insight will be there, as well as the reality orientation will be hampered. So this is the psychosis. This is the severe mental disorder. And what is neurosis? Neurosis क्या होता है? Neurosis में ये moderate और less severe mild mental disorder होता है, जिसमें reality orientation or delusion or hallucination or insight, these are
will not hampered. Only the patient will have emotional problem. Only the problem with emotion, anxiety will be there. That is the neurotic disorder. So schizophrenia क्या है? Schizophrenia is a psychotic disorder. Okay. So what may be the definition of schizophrenia? Schizophrenia is a psychotic disorder where it is characterized by disturbances in thinking. Your thinking will be disturbed, your emotion will be disturbed, your volition means काम करने की जो इच्छा है वो disturb हो जाएगा. फिर क्या होगा? आपका जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो हैम्पर होगा, लेकिन आप कॉन्शियस रहोगे. सो दिस all will be occurred in clear consciousness. So the definition again I am saying, this is the psychotic disorder. This is the psychotic disorder where disturbances in thinking, emotion, volition, as well as the social and occupational dysfunctioning will be there, but with clear consciousness. The patient will remain clearly conscious. So that is the schizophrenia. Okay, schizophrenia का cause क्या होता है? अच्छा, एक काम हम बोलना भूल गए हैं. schizophrenia को हम कल बोलेंगे, आज एक काम बोलना भूल गए हैं, तो एक थोड़ा बोल दे, आप थोड़ा लिख लीजिएगा. भूल गए हैं. एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के एक विंडो होता है, जोहारी विंडो हम बोलते हैं उसको. ठीक है, जोहारी विंडो, वी कॉल इट जोहारी विंडो. ओके, व्हाट इज जोहारी विंडो? किसको बोलते हैं जोहारी विंडो? क्या बोलते हैं जोहारी विंडो को? जोहारी विंडो का 4 ये होता है, ऐसे वाला करके. लीजिए, एक थोड़ा रुकिए. इसको आप देख सकते हो, इसको देख सकते इसका भी हो. ख्याल रखना है, ठीक ना? इसका ही वाइल रखना है. हाँ, इसे ऊपर लिख दीजिए. मैम क्लियर नहीं दिख रहे हैं. ये दिख रहा है, अंजलि म्यूट इसको भी लिख कीजिए. दीजिएगा. इसको दिख रहा है, देख लीजिए थोड़ा, उसको ऑपोजिट आ रहा है. ठीक है, तुम्हारी विंडो क्या है? 4 क्वाड्रेंट है. अपना पर्सनालिटी का 4 क्वाड्रेंट होता है. ओके, 4 क्वाड्रेंट इज देयर इन जोहारी विंडो. 1 क्वाड्रेंट इज फॉर द ओपन सेल्फ. आप अंजलि, आप अपना को म्यूट करिए. कर लिया मैम. यस मैम, यस मैम. Okay, so 4 quadrant is there in Johari window. The first quadrant like that. 4 quadrant is there. Okay, you are seeing 4 quadrant. So ये एक जो quadrant होता है, this quadrant we call it open self. Open self means, what is open self? Open self means you are having certain qualities. Okay, that qualities is known by you as well as known by others. That is the open self. Open self is certain quality you are having that is known by you as well as known by others. So this is open self. This is the part of your personality, one self, part of yourself, where certain quality is known by you as well as known by others. This is open self. Now this is okay, certain quality you are having which is known by you but other person do not know. Okay, other person do not know, but you are having certain quality that you know. So that is the private self. This is private, means you know that quality you are having, but other person from the outside, they do not know that you are having that kind of quality. Then this portion, this quadrant, what is this quadrant? Because you are having certain quality that may be good quality, that may be bad quality, that good quality or that may be bad quality. This quality is not known by you, but other person will know. Okay, so this is the public self. Public जानता है, आप नहीं जानते हो अपने बारे में.
And this portion, this self is called the blind self. Blind self means you know about yourself, you are having certain quality which is not known by you as well as not known by the other person. Okay, so this four window is called the Johari window. Okay, this is the Johari window. So first one is the open self. आप जानते हो, you know certain quality as well as other person will contain, and this will certain quality others know, others do not know, but you know, that is the private self. This one is the public self, that you know but other person will do not know, and this one is the blind self. You do not know certain quality you are having, and other person will do not know that quality. Okay, so this is the Johari window. Okay, this is Johari window. This is related to the therapeutic communication as well as therapeutic nurse patient relationship. समझ में आ गया है ना? Yes, ma'am. Okay, so today I will not linger anymore because you are having again class from 2:30. So for today, therapeutic unit 2 and unit 1 has been completed. So please be prepared with schizophrenia and bipolar disorder for tomorrow. Okay? Schizophrenia and bipolar mood disorder and depressive disorder. We will talk about it tomorrow. এখন আর এসে Yes, ma'am. Thank Okay, you. Okay, ma'am. then Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.